Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I'm here with the second part of your chapter Overview of Fats and Oils. Chemical degradation of fats and oil. It may include the changes that takes place in fats and oils which may deteriorate its quality. Rancidity. What is rancidity? Rancidity में एक्चुअली होता क्या है, या तो इसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाती है या हाइड्रोलिसिस हो जाती है फैट्स में और ऑयल्स में। किन वजूहात की वजह से उनको एक्सपोज किया जाता है बहुत अनफेवरेबल कंडीशंस में, जो कि एयर हो सकती है, लाइट हो सकती है, मॉइस्चर हो सकता है या कोई भी बैक्टीरियल एक्शन हो सकता है, which results in the unpleasant flavor, taste, and odor. So, when these processes occur in food, what happens? The undesirable odors and flavors in the food occurs, जो कि usually हम जो आप देखते हैं लो क्वालिटी फूड होते हैं उनमें ये जो ऑयल और फैट की क्वालिटी रनसिड होने की वजह से, ख़राब हो जाने की वजह से उसके इफेक्ट उसके जो टेस्ट है फूड में उसमें बड़ा प्रोमिनेंटली दिखता है। So rancidity can be of two types. One is oxidative rancidity and another is hydrolytic rancidity. Let's have a look on oxidative rancidity. Oxidative rancidity is the development of off flavors and odors in fats as a result of uptake of oxygen and formation of peroxides, hydroperoxides and numerous other compounds. नाम से ही पता चल रहा है कि ऑक्सीडेशन हो जाती है, ठीक है। और पेरोक्साइड्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स जो ऑक्सीजन के साथ जो हैं फौरन अटैच हो जाते हैं। और फिर क्या होता है कि इनकी जो ओवरऑल जो इनकी ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी में जो इन्वॉल्वमेंट है ऑक्सीजन की, वो क्या होती है, उसके केमिकल चेंजेस में डिफरेंस पैदा कर देती है और उसकी वजह से जो ऑफ फ्लेवर है और ऑफ टेस्ट है वो डेवलप हो जाता है। तो ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी जैसे हमने देखा कि इट रिक्वायर्स ऑक्सीजन, बट उसकी जो एक्टिविटी है वो इन्हांस हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन अदर मेटल्स, जिनमें आयरन और कॉपर जो हैं मेटल्स में प्रोमिनेंटली शामिल हैं। इसके अलावा लाइट है या वार्म टेम्परेचर्स हैं, ये भी prominently they are the factors which may facilitate the oxidative rancidity. So the early phase in which the oxygen uptake begins to occur is known as induction period, right? तो इसमें जितनी भी जो इनिशियल फेज पे ऑक्सीडेशन जब अपटेक हो जाती है और इंडक्शन पीरियड शुरू हो जाता है, तो उसके बाद जो है वो the oxidation reaction keeps generating additional free radicals to maintain the momentum of formation of peroxide and hydroperoxides, ठीक है। और उसकी जो कंटिन्यूटी है कि वो पेरोक्साइड्स और हाइड्रोपेरोक्साइड्स फॉर्म करते रहते हैं, वो ऑक्सीडेशन क्या कहलाती है? ऑटो ऑक्सीडेशन, ठीक है। Here you should know that what are the peroxides. As I have told you, these are the compounds with oxygen that are attached to the oxygen. Also in oxidative rancidity you may see the free radicals, which are unstable compound that contain unpaired electrons, so they have an ability to come up with oxygen to attach with the compound which is which has double bond, और वो double bond remove हो जाता है oxidative rancidity के दौरान और वो single bond में convert हो जाता है। So there now must be a thought कि जैसे आपको मैंने एक्सप्लेन किया कि ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी इज लाइक बड़ी
ऐसी कॉमन सी चीज़ आपको लग रही होगी कि जो यूजुअली इट इज़ रियली हार्ड टू क्योर. So what you can do, you can use antioxidants to prevent it to become oxidized. What are antioxidants? These are the compounds that can retard the oxidative rancidity by providing hydrogen to block the formation of free radicals in fatty acids or by scavenging metal or oxygen. So जब already जो भी आपका जो फॉर एग्जांपल पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हम लेते हैं और हम कहते हैं कि इसके रेंसिड होने का हमें डर है ड्यू टू दी अनफेवरेबल एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हमने डिस्कस किए. फॉर एग्जांपल पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, एज आई हैव एक्सप्लेन यू, इट हैज़ डबल बॉन्ड इन इट. तो एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है कि वो पहले ही जो है वो हाइड्रोजन को प्रोवाइड कर देता है ताकि जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाए और कोई भी फ्री रेडिकल आके उसके साथ अटैच ना हो सके और वो rancid ना हो. So this is the main function of antioxidant, that it blocks the oxidative rancidity. So it should be very clear now what are antioxidants. Antioxidants के addition की वजह से जो फ्री रेडिकल होता है वो या तो ओरिजिनल फैटी एसिड में चेंज हो जाता है और अगर हाइड्रोजन फर्ज करें पेरोक्साइड के साथ मिल भी रहा है तो वो एक स्टेबल हाइड्रोजन पेरोक्साइड बॉन्ड बनाता है. in both cases the rancidity will going to stop. So there are some synthetic antioxidants which have been using in fats and oil frequently by the commercial factories and commercially overall जो products बन रही होती हैं जिसमें fats और oil frequently use होता है. तो उसमें जो types हैं, there are a few types which are mentioned over here. Tertiary butyl hydroquinone antioxidant, which is often added to animal fats, which is used in baking and frying, and another type is used in animal fat, which is used in baking, and then another type of antioxidant is used to retard the oxidation in animal fats, while the propyl gallate is somewhat effective in vegetable oils, but its action is enhanced by combining it with BHA and BHT. So these are the synthetic antioxidants which have been used by the food industries commercially. Hydrolytic rancidity is the type of rancidity in which the hydrolysis of lipid occurs that breaks the lipid into free fatty acids and glycerol. It happens in the presence of lipases. So basically यहाँ पे lipolysis होता है and lipolysis क्या होता है? Lipolysis is the reaction of a molecule of water with a fat molecule to release free fatty acids in the presence of lipase or heat. And what is lipase? These are the enzymes that catalyzes the hydrolysis of fat to yield free fatty acids and glycerol. So basically in this process what happens? There is an uptake of water molecule which is either by the action of lipase or heat takes place. And there is always some time is required for the complete liberation of glycerol molecule from a triglyceride. As we all know that one triglyceride usually undergoes to yield 3 fatty acid molecules and 1 glycerol molecule. So these free fatty acids may alter the flavor or aroma of fat or oil, and this type of rancidity is known as hydrolytic rancidity. In simple words, what happens? The rancidity takes place in the presence of an enzyme which is known as lipase, in which lipolysis occur and the lipid breaks down into free fatty acids and glycerol. Let's have a quick view on the different types of rancidity, basically the differences between both type of rancidity.
Hydrolytic rancidity is caused by the breaking down of a lipid into its component, fatty acids and cholesterol, while the oxidative rancidity occurs due to the oxidation of fatty acid chains, typically by the addition of oxygen across the two carbon bonds in unsaturated fatty acids. Hydrolytic rancidity occurs more rapidly in the presence of enzymes such as lipase and with the heat and moisture, while the process in oxidative rancidity proceeds by a free radical mechanism which is catalyzed by light and maybe in the presence of enzymes or some other metal ions. The water present in the food and the high temperature will increase the rate of hydrolysis to fatty acids, while the complex free radical reactions will produce a wide variety of products, many of which have unpleasant odors or taste in oxidative rancidity. In hydrolytic rancidity, the free fatty acids have an unpleasant smell, giving a rancid smell and taste to milk and butter that have been stored for too long. Longer chain fatty acids are less volatile, so the smell is less noticeable. While in oxidative rancidity, in highly unsaturated lipids such as fish, oils, oxidative rancidity can be a major problem. So there is basically a difference of food which faces the टाइप्स ऑफ रेंसिडिटी ऑक्सीडेटिव ज़्यादातर जो है वो ऑयल्स फिश ऑयल्स वगैरह में होती है और हाइड्रोलाइटिक रेंसिडिटी जो है वो मिल्क के में बटर में पाई जाती है. So what is reversion? Reversion is the development of off-taste in soybean, rapeseed or various fish oils as a result of reaction involving only very minor amount of oxygen. This reversion, or you can say the deteriorative chain, is irreversible, right? So this is also one of the types of you can say the deterioration of fat and lipid. Smoke point. What is smoke point? Whenever we heat the fat and oil to extremely high temperature, there is so much energy present in these lipids that the molecule begin to degrade. और होता क्या है कि वो फैट्स की डिग्रेडेशन जब शुरू हो जाती है तो बहुत माइन्यूट सी स्मोक प्रोड्यूस होती है इनिशियली. The point at which the oil or fat begins to emit some traces of smoke, that point is known as smoke point. ये जो smoke point होता है ये वेरी कर रहा होता है डिफरेंट सब्सटेंसेस के साथ कि उसमें कौन से ऐसे एक्सपोजर मिला हुआ है उस फैट को या ऑयल को हीट से, वाटर से या फूड पार्टिकल से. तो ऑब्वियसली इन सब चीज़ों का भी इम्पैक्ट उस स्मोक पॉइंट पे पड़ता है. बट एज एन इंडिविजुअल जब हम फैट को या ऑयल को हीट करते हैं तो द पॉइंट वेयर द स्मोक emitted, it will be noted as the smoke point of that certain fat and oil. There are different values of smoke points of fats and oils. You can see starting from cephaloid oil, soybean, canola. इनके surface में apparent height में जो है इनकी values लिखी हुई हैं that can be you can say checked when you will inshallah going to perform your practical related to this chapter, okay, how the smoke point can be noted and you can use this table as a reference table. Acrolein. So once the smoke point
starts to appear and we keep on heating the fat or oil, तो उसमें जो डेटेरियोटिव चेंजेस होते हैं वो रुकते नहीं हैं, बल्कि उस कंटिन्यूड हीटिंग के साथ क्या होता है, उसके केमिकल ऑब्वियसली स्ट्रक्चर में चेंज आना शुरू हो जाता है। जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसमें से वाटर सेपरेट हो जाता है और वो क्या फॉर्म करता है, एक्रोलीन। सो बाय डेफिनेशन acrolein is a highly irritating and volatile aldehyde which is formed when cholesterol is heated to the point at which two molecules of water split from it. You can see in the formula which is given. It is immediately vaporized and causes the fat to smoke, and this smoke is extremely irritating to the eyes and respiratory tract. The more the glycerol content in the acid, the smoke point gets lower, and 190 degrees Celsius is considered to be as an ideal temperature for deep frying of any food. Not any food, it depends from food to food. So you cannot fix the temperature of smoke point for all oils. They differ from each other. As a result of prolonged heating as during the period of deep frying, polymerization हो सकती है, जो कि है polymers का formation, जिसमें हमारे पास फॉर्म होते हैं डाइमर्स और ट्राइमर्स, जिसको हम 2 और 3 फैटी एसिड्स कहते हैं. They are formed of a cyclic nature and they begin to evolve from free fatty acids. कार्सिनोजन की फॉर्मेशन भी होती है, ज़्यादातर स्टार्ची फ्राइड फूड में देखी गई है, जैसे कि बेक प्रोडक्ट्स हैं बहुत सारे जिसमें ऑयल्स और फैट्स का इस्तेमाल होता है और उनको प्रोलॉन्ग टाइम के लिए जो है वो हीट किया जाता है, तो उनमें कार्सिनोजन की फॉर्मेशन हो जाती है.